हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस का सिनेरियो मैनेजर कैसे वर्क करता है। तो आज की वीडियो का ये एजेंडा रहने वाला होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, मेरे पास एक डेटा दे रखा है जो कि रिटेल रेवेन्यू प्रॉफिट का डेटा है। ठीक है, और मेरे पास कुछ सिनेरियो दे रखे हैं जिसमें मेरा प्राइस 50, बेस केस की बात करूं तो प्राइस 50 दे रखा है, यूनिट्स मेरे को 10,000। ठीक है, एड स्पेंड 20,000, कन्वर्जन रेट 0.03 और मेरे को COGS पर यूनिट जो दे रखा है वो 30 दे रखा है। ठीक है, तो बेस्ट केस में ये है। फर्दर वेस्ट केस मेरा एक और दे रखा है, फिर वर्स्ट केस मेरा दे रखा है। ठीक है, और फिर मेरा हॉलीडे पुश भी दे रखा है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि हर केस का जो सिनेरियो है, ठीक है, ये मेरे पास 4 सिनेरियो, मैं उनको चेंज करके देखूं और मेरा जो आउटपुट रिजल्ट सेल है उसमें जो मेरे को वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, उनमें क्या चेंजेस हो रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही मेरे पे एक और डेटा दे रखा है। यहां पर ही मेरा वेस्ट केस दे रखा है, वेंडर हाइक दे रखा है, लीन प्लान दे रखा है, एफएक्स शॉक दे रखा है। ठीक है, और ऐसे मेरे पास बेस केस, इसमें लोअर केस लोअर रेट हो गया, लॉन्गर टर्म हो गया, एग्रेसिव पे डाउन हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को पुट करके मैं देखना चाहूंगा कि मेरे वैल्यूज में, मेरे जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। यही सिनेरियो मैनेजर का वर्क होता है। सिनेरियो मैनेजर मिलेगा कहाँ? डेटा टैब में जाएंगे आप, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, ओके, मैं फर्स्ट सिनेरियो ऐड करता हूं जो कि मेरा फर्स्ट सिनेरियो है बेस केस। ठीक है, बेस केस, दिस इज बेस केस। ओके, यहां पर बेस केस, और मेरे को क्या चेंज करना है? चेंजिंग सेल्स। तो मैं बोलता हूं कि ये वाली जो सेल्स है ना, ये सेल्स मेरी चेंज हो रही होंगी, तो यही मेरी चेंजिंग सेल्स है। ठीक है, अब बेस केस में मेरे को चेंजेस, जो भी सेल मेरी, ठीक है, जो भी सेल्स चेंज हो रही हैं, 50, 10,000, 20,000, 0.03 एंड 30,000। ठीक है, कैन यू सी दिस बेस केस? तो बेस केस में मेरे पास यही डेटा है, तो मैं ओके करूंगा और इसे ऐड कर दूंगा। ठीक है, फर्दर मैं एक केस और ऐड करूंगा जो कि मेरा होगा बेस्ट केस। दिस इज माय बेस्ट केस। यहां पर फर्दर सेल, जो भी सेल्स हैं वो सेम रहेंगी, और यहां पर मैं ऐड करूंगा 58। ठीक है, और इसमें मैं ऐड करूंगा, नेक्स्ट मेरा इसमें ऐड कर रहा हूंगा मैं 12,000, दिस इज माई 12,000, और यहां पर मैं ऐड करूंगा 25, दिस इज माई 25,000, और यहां पर मैं ऐड कर रहा हूंगा 0.035, एंड यहां पर मैं ऐड करूंगा 28। ओके, दिस इज माई बेस्ट केस। नाउ ओके, another scenario I had added. Now further one more scenario I want to add. This is my worst scenario, worst case. ठीक है, यहां पे वर्स्ट केस होगा, सेम सेल्स मेरी चेंज हो रही होंगी, और यहां पर मेरा होगा 44, नेक्स्ट मेरा होगा 8,000। ओके, इसके बाद ये मेरा होगा 15,000, यहां पर मेरा होगा 0.025, और यहां पर मेरा होगा 32। ठीक है, दिस इज माई वर्स्ट केस, वर्स्ट केस। ठीक है, ऐड करूंगा अनदर सिनेरियो, यहां पर हॉलीडे पुश में, दिस इज माई हॉलीडे पुश सिनेरियो। ठीक है, नाउ ओके, हॉलीडे पुश में मेरा 55 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 15,000, ये हो जाएगा मेरा 40,000। ओके, और ये मेरा हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी माई 0.04। ठीक है, और यहां पर मेरा हो जाएगा 29। ओके, ना इफ आई प्रेस ओके, तो मेरे पास काफ़ी सारे केस आ गए। ठीक है, अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं, तो अगर मैं शो करता हूं, कैन यू सी मेरी वैल्यूज बेस्ट केस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं। ओके, ठीक है, वेस्ट केस में मेरा 58 दे रखा था प्राइस, कैन यू सी दिस, यहाँ पे 58 है। ठीक है, वर्स्ट केस में जाऊं, वर्स्ट केस में ये भी मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, और मेरा हॉलीडे पुश में भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब थोड़े से हम फॉर्मूले इसमें लगाते हैं, उसके बाद हम इसे फर्दर देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू मेरा होगा प्राइस इनटू एंड यूनिट सोल्ड। ओके, सो दिस इज माय रेवेन्यू। ओके, फर्दर आई वांट, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट मेरा होगा दिस प्राइस यूनिट माइनस, दिस इज माय
COGS per unit. Okay, now into this is my unit sold. Okay, so this is my gross profit. Now what further? Marketing ROI होगा मेरा gross profit. Okay, and minus this is going to be my advertising spend. Okay, this is advertising spend. Now further I will divide by this is going to be B6 advertising. Okay, so this okay, yeah, advertising spend. Okay, this is my marketing ROI. Okay, now net profit. What is going to be my net profit? It is going to be gross profit minus advertising spend. This is my okay, no, actually net profit is going to be my gross profit minus advertising spend. Okay, so it is giving me error here. What was my gross profit? Gross profit is going to be B4. This is my B4 price per unit, and minus this is my COGS, and here let me wrap in parenthesis, and this is going to multiply with unit sold. Okay, perfect. It's 13. Now net profit B12, which is my gross profit minus advertising spend. Okay, this is my net profit. And what is my profit margin? Profit margin I will use here if error. Okay, here what I will put, in value it is going to be my net profit and divide by revenue. Okay, this is my profit margin. Okay, now 0 if any error occur. Okay, so this is my profit margin. Okay, now I will go to the scenario manager. Here I am having different scenario. Now for the holiday post I can see this worst case. For the worst case, can you see data is changing? For the best case, data is changing. For the base case, data is changing. Okay, can you see this? So we can check different scenario. We can create the scenario and we can check them. Okay, let's go to the further project budget. Okay, for this sheet I am having project budget. Okay, so raw material, labor cost, overhead, contingency, exchange rate. Okay, rate USD to INR. Okay, so how it is going to? For total direct cost. Okay, so total direct cost is going to be my sum of raw material to labor cost and overhead. Okay, so this is my total direct cost. Okay, now further my contingency. So this is going to be my total direct into this contingency. Okay, so this is my contingency. Now total cost USD, what it is going to be? It is going to be my this one plus it is going to be USD, total cost USD. So it is going to be my B this contingency. Okay, so this is my total cost USD, and here in INR this is going to be this and multiply with this one 83. Okay, so this is going to be cost in INR. Okay, so this is the case. For my base case. This is my base case. Okay, let's go to what if analysis scenario manager. I will create the scenario for this sheet now. So base case is going to be what? This is my base case. Here changing cells. What cells I want to change? So before that, let me show you one thing. Here when I was choosing this scenario manager and I was having scenario, if I could see you edit. So here you will find I was getting base case and I was getting this B4, B5, B6, B7, B8. Okay, instead of getting actual price per unit, this title, I was getting the cell index. Okay, so
I don't want to get the cell location, cell index. What I want let it must show me this. So what I can do, I can go to the formulas, then define name. Okay, so in define name, so this is going to be no, for the create from selection. Okay, for this left column. Okay, so okay, perfect. Now I will go to my data tab, and here what if analysis scenario manager, and here I will go to add. Now this is my base case. This is my base case, and the changing cells, I want these cells going to be changed. Okay. Now can you see this? Instead of cell location, I am getting the actual name. Okay, so 12,000, 80,000, 4,000, 0.1. So it is okay for base case. Go to the best case. For the best case, this is my best case here. Press OK. Now it is going to be 13800, and here it is going to be my 82,000, and here it is going to be my 42,000. Okay, now here it is going to be 0.12, and here it is going to be 84.5. Okay, perfect. This is my best case. Now that was the vendor hike actually. That was the vendor hike. Okay, let it be. So lean plan. This is lean plan. Now okay. So for the lean plan, it is 1,08,000. It is 76,000. 76,000 I am having. Further I am having 38,000. Okay, so this is 38,000. Then we are having 0.08. Then for this we are having 82. Okay. Now go to best case, edit this, and I want to put the name for this. This is going to be my vendor hike. So this is my vendor hike. Now let me press OK. Now OK, and there we go. So for the add, I will add another scenario which is FX SOC, and here OK. Now here it is 1,20,000. Okay, perfect. 80,000, 40,000, 0.1, and here it is going to be 88. Okay, so press OK. Now we had set all of them. Okay, so go to the vendor hike. So can you see the price are changing? Lean plan, can you see price are changing? For FX SOC, these are changing. Okay, so all of them are changing. Okay, so what you can do, you can check different scenario as I already shown you, and as well you can get the summary of them. Okay, for the FX SOC, if I want summary, okay, so for all of them I will get the summary, scenario pivot report or scenario summary. I want scenario summary. Okay, so here you can see I have just see this current values we are having. Base case I am having, vendor hike, lean plan I am FX SOC. So this is the summary which has been generated, and for this as well, for this sheet I can get the summary. Okay, if you could check this one, data tab, what if analysis, scenario manager, for click on any of them and get summary, you will get the summary of them. Okay, so you can get the scenario pivot report for that. Okay, so you will get the scenario pivot report as well for this. Okay, so whatever you want, you can pick it. This is the scenario. Okay, scenario summary or maybe scenario pivot table. Okay, so I hope आप समझ गए होंगे कि कैसे ये वर्क कर रहे हैं. Now I am having another data which is loan. Okay, loan payment data. ये आपके लिए एज अ होमवर्क होगा. आप इस पे ट्राई करके देखें, इज इट वर्किंग, योर सिनेरियो मैनेजर इज वर्किंग और नॉट. ओके, so that was it for this video of what if analysis scenario manager. Okay, thank you for watching. We will meet in next video with another interesting topic in Excel.